अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पॉटरिंग। स्पॉटरिंग क्या है? स्पॉटरिंग इन्वॉल्व द वेपराइजेशन मटेरियल फ्रॉम solid surface by bombarding a targeted with a high velocity ions of an inert gases which causes ejection of atom and cluster। ये है स्पॉटरिंग का डिफिनीशन। ठीक है, इसके साथ कुछ प्रॉपर्टी भी हैं। Since high pressure harder transportation of sputtering material, spotter sources such as an ion gun or hollow cathode plasma sputters sources are normally used under vacuum। दूसरा प्रॉपर्टी है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली as a well neutral charged cluster are produced। The cluster produced are not and cooled down by the evaporation of light. Target material may be some allow ceramic or compound. Generally sources to substrate distance is short compared to vacuum diffusion। Sputtering diffusion can be performed by bombarding an inert ion and solid surface target in a vacuum using an ion gun or low pressure plasma less than 5 meter torus। Sputtering can also be done at a higher plasma pressure 5 से लेकर 13 तक। The plasma used in sputtering can be confined near sputtering surface or many fill the region bit sources the substance। In a sputter diffusion, some inert gas ions like argon positive are incident on a targeted at a high energy। The ions becomes neutrally at the surface but due to their energy incident to ion many get bounced back created collision caused and targeted atom displaces some of the atoms in the targeted creating vacancies interstitial and other defects dissolve some adsorbate created photons while losing energy to target atoms or even cluster ions and second electron। ये डायग्राम आप भी देख सकता है। कोलिजन केसेट भी है, लेटेस्ट एटम्स में है, इसमें टारगेटेड मटेरियल भी है, इंसिडेंट आयन भी है। जिन प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ये सारा ये डायग्राम से भी पहचान हो सकता है। स्टूडेंट इसमें अंदर है स्पुटरिंग प्रोसेस। इसका प्रोसेस भी किस तरह पे हो सकता है, ये इसका डायग्राम भी है। कैथोड भी है, आयन फ्लक्स इसमें शामिल है, प्लाज्मा है, सबस्ट्रेट है, वैक्यूम ट्यूब है, एनोड है और पावर सप्लाई भी है। The deposition is carried out in a high vacuum or ultra high vacuum system equipped with the electrode, one of the which sputters targeted other substrate। सेकंड नंबर आता है द फर्स्टली आयन प्लाज्मा इज क्रिएटेड। ठीक है, द आयन बम्बार्ड द टारगेटेड मटेरियल एट कैथोड। टारगेटेड एटम आर रिजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड बाय एनर्जी एंड momentum transfer। These sputters atoms flow across the chamber and are deposited onto the substrate at anode। ये डायग्राम जो मैंने भी पढ़ा था ये सारा इसका डिटेल भी है। बाद भी आता है एडवांटेजेस ऑफ स्पॉटरिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पॉटरिंग। एटम्स allow and compound can be sputter deposit। Film thickness is easily controlled for a fixing operating parameters and simple adjusting
the deposition time. The sputtering target provide a stable long vaporization sources. The source and substrate can be spaced closer together. The sputter's deposition chamber can have small volume. Disadvantages का क्या है? Sputter rate at low compared to the thermal evaporation. Sputtering target are often expensive and material used many may be poor. Most of the energy incident on the targeted becomes heat which must be removed. Some material like organic solid are easily degraded by ionic bombardment. स्टूडेंट इसके बाद भी आता है एप्लीकेशन ऑफ स्पुटरिंग. स्पुटरिंग डिफोजिशन स्पेशली यूज फॉर ऑब्टेनिंग साइकोमेट्रिक थिन फिल्म्स. सेकंड नंबर आता है स्पुटरिंग इज आल्सो इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग नॉन फोरस कंफर्ट फिल्म्स. इट इज़ widely used to deposit thin film metallization on the semiconductors material coating on the architectural glasses, reflective coating on compact disc, magnetic films, dry films, and lubricant and decorating coating. स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक हम मुकम्मल हो चुका है. बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स अभी मिल सकता है. आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. बिल्कुल आपको इस तरह नोट्स भी मिल सकता है.